Hello guys and girls, I am Dr. Sangita Diliprao Sonawane and I welcome you all back to my channel. Today's session will be mainly for all my mates who are attempting this upcoming FMGE December 2021 session. I know I have already made a video for the schedule and the plan that they shall follow for this session, but in this today's session I'll be answering few questions that they have usually midway of their preparations, because I feel this is the time usually people tend to lose focus or tend to deviate from their actual plan and follow somebody else's plan. So I thought it is utmost important for me to show up and once again help you regain that confidence in yourself, in your preparations, in your plan, and finally also in your faculties and your notes, right? So first of all, I'll be answering some queries, guys, okay? And if you have any queries, if you have any questions, if you're feeling low, please try to just ask your questions in the comment box, okay? And I'll be more than happy to answer all these queries. Now first of all, let's begin with this quote, which states, believe in your plan, trust in your preparation, and put in the effort. Why I have included this is because I have always received queries that we tend to deviate from our plan always, right? So for this, guys, please do remember you have invested major bulk of your time in preparing your schedule. So stop doubting it, okay? So stop doubting it, because no one else can know yourself better, right? So अगर खुद ने खुद का प्लान बनाया, so खुद पे भरोसा रखना is like really very much important at this point of time, okay? You know your strengths and weaknesses better than anybody else in this world. So just because that some guy is following somebody else's plan, that does not make you inferior somewhere, okay? तुम्हारा plan कहीं गलत नहीं होने वाला, because that plan is designed for yourself according to your strengths and weaknesses, okay? So just believe that blindly, okay? So always believe in your plan, trust in your preparation, trust in your abilities that you can do it, okay? Never doubt your abilities कि नहीं यार मुझसे तो नहीं हो सकता. Everybody is an average student, guys. It's just the hard work, the consistency that pays off finally, right? So please remember, you need to put in the effort and just follow your plan, just follow your schedule, okay? Don't doubt it. Then moving on to our next query, guys. The next query is very much important, because this I have been receiving from many students that, sir, that we usually have issues in time management. So for this, guys, I've always said that go according to your schedule so you would not run out of time anywhere, right? I know that every day is not the same, but as soon as you miss something out of your schedule, make some changes to cover that part somewhere. I told you in the beginning that wherever you will keep gap between the subjects, those gaps can definitely help you cover for the topics where which you could not finish on time, right? So as this quote says, that the bad news is time flies, but the good news is that you are the pilot. So please remember, guys, you have the things in your hand. ठीक है, time तुम्हारे control में है, right? You are not in control of the time. So as you have less time in hand, please remember, guys, you need to be on your toes, okay? एकदम भागना है इस रेस में, अभी चलना छोड़ देना है. Now you need to run at any cost. Try to finish the things as soon as possible. I'm not saying this that you need to just read things without understanding it properly, okay? Definitely you need to comprehend things at the same time, but try to finish them as soon as possible. For example, अगर 3 दिन का कोई सब्जेक्ट 2 दिन में ख़त्म हो रहा है, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, right? But if you are taking like 3 to 4 days for a 2-day subject, then definitely there is something wrong. You need to reanalyze yourself at this point of time, because अगर तुमने अभी time लगा लिया, definitely you will be running out of time for those subjects maybe you thought at one time you were strong at, right? जो मैंने schedule दिया था उसके according, I have told you to cover your weaker subjects in the first and then your stronger subjects at the last. But कभी कभी क्या हो जाता है कि यार लास्ट में तो हमारे स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट्स ही करना है, सो यू एक्चुअली रन आउट ऑफ टाइम. सो मे बी जो 2 दिन का सब्जेक्ट है उसके लिए तुम्हें बस 1 दिन मिल रहा है लास्ट में. सो प्लीज़ रिमेंबर, गाइज, ऐसी गलती नहीं करनी है. सो ट्राई टू फिनिश दैट सब्जेक्ट. अगर 2 दिन का सब्जेक्ट है 2 दिन में ही ख़त्म करो, राइट? और मे बी ट्राई टू फिनिश इट अर्लियर. अगर नहीं हो पाता है, सम डे इट कैन टेक 2.5 days. सो डोंट वेस्ट दैट हाफ डे. दिस इज़ अ इशू विद मेनी ऑफ यू गाइज. प्लीज़ रिमेंबर, गाइज, वो आधा दिन वेस्ट करने के लिए नहीं होता है. वो आधा दिन लोग MCQ करते रहेंगे, वो आधा दिन किसी टेस्ट दे दिया, ठीक है? एवरीथिंग यू कैन डू, ओके? You can solve your MCQs, you can give your test, anything you can do at that time. But please remember, you need to initiate something
समथिंग एल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, ठीक है. भले ही तुम 4 पन्ने पढ़ो किसी अगले सब्जेक्ट के, बट स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल. डोंट लीव इट फॉर द नेक्स्ट डे. अगर तुम आधा दिन बचा रहे हो, देन डेफिनेटली you need to cover something else in that time as well, right? You cannot just waste that time anyways. Then guys, like the next query actually is that we are not, like, people try to ask me that how are you being so practical. So I know guys, we are not robots, so things are going to happen. There might be some emotional lows, there can be some health issues that you face, there would be some mental lowdowns, there would be some family issues, but guys, please remember, all of these excuses, okay, all of these things are never ever gonna be an appropriate excuse if you could not make up this time for this December session, right? I know I am being too practical in this, but अभी कुछ दिनों के लिए practical होना ही ज़रूरी है, okay? So all of these things can be taken care of once you are done with this examination, right? इन चीज़ों के लिए बहुत टाइम रहेगा तुम्हारे पास. I know like health issues are really severe at times, but अगर तुम 2 दिन अगर बीमारी में निकाल देते हो, ट्राई टू कवर इट विद इन द नेक्स्ट 4 days, ठीक है. सो अगर किस दिन अच्छा फील हो रहा है, इफ़ यू आर इन अ स्टेट वेर यू कैन कवर मोर ऑफ द थिंग्स, डेफिनेटली ट्राई टू कवर दीज लॉस्ट 2 days समवेयर, ओके. डोंट एक्सटेंड इट इन योर प्लान. अगर 15 अक्टूबर तक का प्लान है, नहीं 17 अक्टूबर तक नहीं जाना चाहिए. यू नीड टू फिनिश इट विद इन 15 अक्टूबर, राइट. सो ये तुम्हें ऐसे ही कवर कर लेने हैं किसी और दिन में, जब भी तुम्हारा कोई फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन अ ब्रेक फॉर योर सेल्फ और एनीथिंग एल्स, ओके. सो प्लीज़ रिमेंबर गाइज, because I always say it's not about the destination, it's always about the journey to get there. But this is a quote I also believe in, ठीक है. तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारा डिटर्मिनेशन, योर ग्रिट, all these things, all your efforts, okay, all of these things would be in your journey, okay. That would be really important for you. But for the people out there, no one is going to ask you that how was the journey, but finally everyone is going to focus on what the destination is, because destination is what matters, right? So I'm not saying that कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसलिए तुम अपनी चीज़ों को बदलो, but please remember guys, destination is also important along with the journey as well, right? So अगर तुम्हें अपना फाइनल गोल अचीव करना है तो जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट, और फाइनली जर्नी का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग टू अटेन योर फाइनल डेस्टिनेशन, राइट. सो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, इन 4 महीनों में तुमने एकदम बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, बट अगर फाइनली तुम पास नहीं होते हो, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवेयर, राइट. सो अपनी जर्नी इस हिसाब से डिज़ाइन करो, इस हिसाब से प्लान करो, और कंसिस्टेंट रहो ताकि तुम वो डेस्टिनेशन अचीव कर पाओ, बिकॉज फाइनली वॉट इज़ गोइंग टू मैटर इज़ दैट डेस्टिनेशन, राइट. Moving further to our next one, or this is very much important because always people ask whether hard work or whether smart work. सबको पता है smart work is required, okay. Everybody says smart work is required, but लोगों को यही basic difference नहीं पता है. What is the basic difference in hard work and smart work? Okay, most of the people are doing hard work, but they say no, मैं तो एकदम smartly work कर रहा हूँ. So I'll like tell you few points how to differentiate between hard work and smart work guys, ठीक है. So hard work में usually क्या होता है, we usually tend to focus on the quantity over quality. बहुत सारे लोग मैंने बोलते हुए सुना है that we study for 14 hours, we study for 16 hours. यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने टाइम के लिए पढ़ रहे हो, अगर क्वालिटी इज़ बीइंग अफेक्टेड, ठीक है. तुम वो 14 घंटे में से अगर बस 4 घंटे अटेंशन से पढ़ पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पा रहे हो, सो बाकी के घंटे पढ़ने का मतलब ही क्या रहा इफ़ यू एक्चुअली आर नॉट इनटू दैट स्टडी मोड, राइट. सो क्वांटिटी इज़ नेवर एवर गोइंग टू डिसाइड about your preparations finally, right? It is always a combination of quantity as well as quality. I don't say that quality only matters. तो ये नहीं कहूँगा मैं कि बस 2 घंटे पढ़ने से तुम पास हो जाओगे. Definitely you will require almost 6 to 8 hours of strenuous study, okay? ऑलमोस्ट तुम्हें 6 से 8 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, बट ऑल दीज 6 to 8 hours शुड बी विद कॉन्सेंट्रेशन, राइट. अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो 14 घंटे पढ़ रहे हो, 18 घंटे पढ़ रहे हो, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, ओके. ऑलवेज रिमेंबर दिस. एंड हाउ टू मेंटेन दिस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टेक गैप्स इन बिटवीन, ठीक है. जब भी कोई कुछ भी लगता है यार बोर हो रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही, टेक अ मैक्सिमम 15 minute गैप, गो हैव अ टी, हैव कॉफ़ी, जस्ट रोम आउटसाइड विद फ्रेंड्स, कुछ भी करो, बस 15 मिनट में कर लो, वापस आ जाओ, गेट बैक टू योर स्टडीज़, ओके. सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू लाइक मेंटेन योर स्केड्यूल, मेंटेन योर अटेंशन थ्रू आउट, राइट. सो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बना रहेगा.
Moving to the next difference which states that hard work usually has a direct and linear approach. जो सामने दिख रहा है, जैसे घोड़े की नाल लगा देते हैं ना, बस सीधे दौड़ना है, वैसे दौड़ता रहता है इंसान हार्ड वर्क में, ठीक है. रात दिन पढ़ रहे हो, जो है सामने बस वही पढ़े जा रहे हो, वही पढ़े जा रहे हो. यू आर नॉट ट्राइंग टू कंबाइन इट विद अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है. स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज अबाउट कॉम्बिनेशन, ठीक है. क्वांटिटी प्लस क्वालिटी तो हो ही गया, और एक कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड दैट यू शुड बी फ्लेक्सिबल एट टाइम्स, ठीक है. तो ऐसा नहीं है, मैंने जैसे बोला हार्ड वर्क में क्या हो जाता है, यूजुअली द पर्सन इज फिल्ड विद नेगेटिविटी अगर तुम्हारा एक दिन भी खराब हो जाता है. वेर एज अ पर्सन हु इज डूइंग स्मार्ट वर्क, अगर एक दिन खराब हो जाता है, ही इज ट्राइंग टू कवर दैट अप, ठीक है. सो अगले दिन में वो 2 दिन का काम कर लेगा. दैट इज वॉट इज स्मार्ट वर्क. यू शुड बी फ्लेक्सिबल. अगर कोई दिन खराब वेस्ट भी हो जाता है, सो दैट इज नॉट गोइंग to affect your mentality somewhere, right? And along with that you need to find effective ways of delegation. तुम्हें टास्क डेलीगेट करने आने चाहिए. हर रोज़ इतना काम करना है तो करना है एट एनी कॉस्ट, राइट. अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू सॉल्व योर MCQs. बस नोट्स पढ़ के नथिंग इज गोइंग टू हैपन बिकॉज यू नीड टू अप्लाई दैट नॉलेज समवेयर, राइट. So please remember, along with reading your notes, that is the most important thing, but also try to solve as many as MCQs possible. और बस MCQs solve करने से भी कुछ नहीं होने, मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया ये चीज़. MCQs के साथ साथ उसका एनालिसिस करना भी ज़रूरी है. I tend to find many people just solving MCQs, और उनको explanation पढ़ने के लिए बोलो तो just they read about the answer, the correct option, right? Along with the correct option, you also need to read about the other options that were given, why they were wrong, right? That is going to make your concept crystal clear. एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, जो MCQ डिस्कशंस अगर तुम्हारे पास आ रहे हैं, इफ देर आर एनी वीडियोज दैट आर कमिंग अलॉन्ग योर वे फॉर योर MCQ डिस्कशंस, गो एंड अटेंड दोज. ट्राई टू मेक टाइम फॉर दोज डिस्कशंस ऑल्सो, बिकॉज इन दोज डिस्कशंस पीपल विल ऑल्सो ट्राई टू फोकस ऑन द अदर ऑप्शंस वाई दे वर नॉट करेक्ट, और दे विल ऑल्सो ट्राई टू फोकस ऑन द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, right? So that is very much important. Along with that, effective ways of delegation में तुम्हें ज़्यादा टाइम उन टॉपिक्स को देना है which are really high yielding, ठीक है, जो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं एग्जाम्स में. There are some topics which have been repeated multiple times in the examination, और वो आज भी important है और important रहेंगे आगे भी, right? So that is the thing that you need to figure out and then delegate your task accordingly. The next difference guys is hard work usually works for the long run. So मतलब अगर तुम अपनी UG days में हो, definitely hard work is going to pay better, right? तुम already textbooks पढ़ रहे हो, you are making your own notes, that is really good for your long run, okay? Long run में hard work is going to pay off, but now you have time constraints, ठीक है. तो टाइम कंस्ट्रेंट्स के टाइम में मतलब रियली यू हैव ओनली 3 months लेफ्ट इन योर हैंड, और इस 3 महीनों में अगर तुम्हें सीरियसली मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचना है अपने, फाइनली यू नीड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, यू शुड प्लान योर स्केड्यूल अकॉर्डिंगली, राइट. मैंने ऑलरेडी बता दिया था वो स्केड्यूल, बट अगर तुमने कुछ मिस आउट कर दिया है, इफ़ यू हैव लेफ्ट विद लेस टाइम एंड बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स बचे हैं, तुम अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे, सो नाउ इज़ द टाइम, अगेन जाओ अपने स्केड्यूल को थोड़ा अमेंड करो, ओके. दैट इज़ इन योर हैंड, right? According to the time that you are left with, just what we can say, choose the best source that can be finished within that particular span of time, ठीक है. बट अगर पहले कुछ पढ़ चुके हो, just don't change your source at this point of time now, okay? Follow the same source, just try to read the important points, the high yielding points from that topic at least, right? और कोई भी topic, कोई भी subject छोड़ना नहीं है, that I have already told you, right? Just try to get the best out of the syllabus that you have in this limited time, right? That is what is smart work. And lastly, हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज टर्नस एंड इट इज़ कॉम्प्लेक्स. बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, ठीक है, कि प्लान कैसे करना है, कैसे चलेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है. लाइक वेर अ स्मार्ट वर्क डेफिनेटली अगर तुमने ढंग से प्लान कर ली, येस स्मार्ट वर्क का प्लानिंग इज़ कॉम्प्लेक्स, बट अगर तुमने ढंग से प्लान कर लिया एंड यू आर अप्लाइंग इट, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव. कम टाइम में तुम ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाओगे, राइट? और कम टाइम में अगर तुमने ज़्यादा चीज़ें पढ़ी भी है विद अटेंशन, दैट इज़ गोइंग टू यील्ड यू सम मोर थिंग्स एज कम्पेयर टू द हार्ड वर्क. सो यही बेसिक डिफरेंस गाइस तुम्हें समझना है. एंड नाउ ट्राई टू अडेप्ट टू स्मार्ट वर्क, बी ऑन योर टोज. तुम्हें भागना है इस रेस में, अभी टाइम कम बचा है, राइट? और अगर तुम लाइक अलॉन्ग विथ MCQs ऑल्सो तुम मिनी मॉक टेस्ट दे सकते हो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट वुड बी ग्रेट. जो सब्जेक्ट्स तुमने कर रही है उसकी एक कोई मिनी मॉक टेस्ट डिज़ाइन कर लो, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू एनालाइज. जो सब्जेक्ट्स तुम्हें पता चलेंगे कि जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ भी लिए उसमें से मेरा वीकर सब्जेक्ट कौन सा है, इट विल हेल्प यू फोकस ऑन द वीकर सब्जेक्ट्स. जो जब बाद में जब रिविजन करने वाले हो, यू कैन फोकस मोर ऑन दीज वीकर सब्जेक्ट्स,
राइट, वो अभी पता चलेगा व्हेन यू आर गिविंग मिनी मॉक टेस्ट, ठीक है. उसके लिए टाइम स्पेयर करो. आई एम नॉट आस्किंग यू टू लेंड सम टाइम फ्रॉम योर एक्चुअल प्रिपरेशंस. जस्ट जो बीच बीच में टाइम निकलता है, दैट टाइम यू आर गोइंग टू लेंड फॉर योर मिनी मॉक्स, राइट. सो दिस इज द टाइम वेर यू आर स्टार्टिंग योर मिनी मॉक्स नाउ. Along with that, अगर कोई भी issue होगा, you can definitely type your queries in the comment box. I can come up with the video, or I can just answer your queries in the comment box itself. Okay, thank you so much, and all the very best guys for your preparations. कोई भी दिक्कत आती है, please remember that we are together in this. Okay, so but basically I can guide you, I can support you throughout, but finally your parents can support you, but the journey is yours totally, right? The hard work, the smart work, the plan, the schedule, the strategy, everything is yours. You need to plan it accordingly. You need to plan for yourself. No one can help you in that, right? मैं पढ़ाई करने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता. Definitely I can help you in short, like narrowing down to something that can like those are the high yielding points, or those are the questions that have been repeated. These things I can be telling you, but I cannot study of you instead, right? So ये तुम्हें याद रखना है कि पढ़ाई तो तुम्हें ही करनी है. फाइनली नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू. जस्ट इफ़ यू आर फ्रस्ट्रेटेड गाइज, ये होता है टूवर्ड्स द प्रिपरेशन इन द मिड वे, डेफिनेटली लाइक बहुत पढ़ के ना एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है. फॉर दैट आई वुड रिकमेंड जस्ट गेट आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, ठीक है. ट्राई टू फाइंड आउट वेज विच कैन हेल्प यू इन दैट. Okay, some people like can have a coffee, some people can just roam, go in the garden, have a good walk in the evening, or just talk to your parents, talk to your family, talk to your siblings or your friends. Okay, just try to get out of that frustration, and like when you are normal, get back again to your preparations, right? So बिल्कुल time waste नहीं करना है अभी इस point of time पे, and all the very best. And thank you so much. Okay, hit the like button if you have liked this video, subscribe to the channel and share with your friends who are in need. And thank you so much guys.